Hello everyone, I welcome you all to IAS SHAASHTRA education platform, a premier institute for civil services preparation of Eastern India, right? And this session will be particularly dealt for the strategy session of Indian Polity. We'll be analyzing that what all sort of questions are being asked in your preliminary examination, and simultaneously we'll also have a look on what sort of questions are being asked by this Union Public Service Commission with respect to your mains examination, right? And basically, see, there is this one common saying almost everywhere in India. It must be there in West Bengal or Eastern India as well. That whenever you are going on a war, right, to assess your enemy, what sort of weapons he has got, what sort of attacking strategy it has got, is the most important thing to win a war, right? So similarly, before starting this subject, right, we'll be looking at what should be our approach towards this subject. वो हमें पता कहाँ से चलेगी? The one thing जो toppers हमें हमेशा बोलते हैं, that we were focusing on previous year questions, we were focusing on the syllabus aspect. Syllabus will be dealt, right? But let's first see that what sort of approach do we require to solve this subject. Clear? चलिए. सबसे पहले, if we look at the trend of prelims questions, right? So the trend since 2014 is bit of a same, with the exception of 1 year, that is your 2016, right? Now if I tell you, or if we make an analyzation of the questions, so in 2016 it was only an exceptional year, right? Here UPSC just asked around 7 questions or 7 to 8 questions, right? And immediately अगर हम इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं एंड हम बोलते कि जी हाँ, पॉलिटी में तो 7 क्वेश्चन आए हैं, आई विल नॉट प्रिपेयर इट फॉर दिस ईयर, है ना, तो मैं क्या करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके चला जाता हूँ, उनके बेसिस के ऊपर प्रीलिम्स में तो कट ऑफ आता है एंड आई विल बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. नो, this is possible for the subjects, for other subjects, for an example, which are called as shockers. You can do this strategy in geography, you can do it in history, to be very precise, in ancient and medieval, where 1 year you will get a lot of questions, other years it will be minutely asked in the examination, but not for Indian polity. I'll show you with an example. You talk, people say that after 2013, 2014, the pattern of the examination changed. Yes, very much accepted. But since 2013, since 2014, if we analyze the trend, there is consistency in the subject. There are 3 subjects which are very much consistent. You name environment is number 1, second is economy, and third is polity. These will go consistent no matter what, right? सबसे पहले, if we see 2016, 7 questions were asked, still a decent number. You go to year 2017, the number of questions stand at 22, one of the highest ever, right? If you go in 2018, again 12 questions were asked. 2019 there were 13 questions, to be very precise. 2020 में the number again went on the higher note and the questions were 16 questions were asked from Indian polity itself. Then moving on to 2021, again 12 questions were there. Here we again have 11 questions, and this year again we have 13 questions in total, right? So this is the consistency of the subject. From here, what I want to make you understand is that this subject is consistently being asked by UPSC. Or leave the prelims. If I tell you the consistency of this subject in mains examination, okay? So you are seeing this green color column, no? This green color column will show you the number of questions being asked. And this dark green color or turquoise color column is showing you what? It is showing you the marks which these questions carry. If I explain you कि भाई जो अपना मेंस है ना, तो मेंस में you people got 20 questions. ठीक है जी. मेंस में बेसिकली हमारे 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4. उसमें से GS2 का एक पेपर है. GS2 पेपर consists of basically 3 main subjects. First is your Indian polity. And here in the first class only, I will make you people understand that what is the difference between political science and polity. हमारा subject matter political science कभी भी नहीं है. What we have to approach in this subject is Indian polity. And hence the very first class we'll be starting with will be the difference between the polity and political science, so that at least you should have a clear direction that where we have to approach, right? उसके बाद second thing which we have to do is your governance portion. ठीक है?
जिसमें आपका सारा पॉलिसीज वगैरह होगा, व्हाट आर सिविल सोसाइटीज, व्हाट आर एनजीओज, दिस दैट. Then moving forward, the third part would be international relations. These two will be dealt by a separate teacher. I'll be dealing with Indian polity, right? Now, this GS2 paper is of 250 marks. Is of 250 marks. Now, we are going to have a look that how much weightage does this subject of Indian polity alone in GS2 carries, by which I'll be substantiating the importance of this subject. Understood? Chalo. First of all, if we look in this what we call 2016 paper, right? So in 2016, the paper was of 140 marks. So out of 250, 140 marks polity was there. If you ask me the number of questions being asked, so in total there were around 10 questions or 11 questions to be precise, and 11 में से 5 questions were there which were 10 markers, and 6 questions were there which were almost of what you can call 15 marker questions were there. तो दो ही तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, 10 नंबर वाले और 15 नंबर वाले. 10 नंबर वाले 5 क्वेश्चन थे, 15 नंबर वाले 6 क्वेश्चन थे, एंड द टोटल मेड 140. ठीक है. नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज्ड अ बिट, द नंबर वाज 130. It again increased, we had around 150 marks paper, again we had 140 marks paper, again it got decreased to 130, then again we had around 140 का paper, then again 150, and this year it was again something near 150, right? So this is the relevancy of this means examination, and this is the relevancy of this subject known as Indian polity. Understood? तो ये तो हो गया जी कि भाई हमें पॉलिटी के ऊपर एम्फेसाइज करना क्यों चाहिए. Understood? Now let's move to the next topic. सबसे पहले, this polity subject is a bit vast subject, right? And being a bureaucrat, see, understand, basically कोई भी जो देश होता है ना, उसमें 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं. One is your legislature, second is your executive, and third is your judiciary. Now when you will be going to the post of executive, ठीक है, मतलब आपको पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना है. The politicians will be making the policies because they got the mandate of the people. They are making the policies. It's your job now to do what? To implement those policies. So उसके लिए आपको पॉलिटिक्स का और टू बी वेरी स्पेसिफिक इंडियन पॉलिटी का अंदाजा होना चाहिए. ठीक है. तो उसके कंटेक्स्ट में ये बहुत वास्टनेस, जो व्हाट वी कैन कॉल कि भाई इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है इस सब्जेक्ट का बहुत वास्ट है, लेकिन फॉर आवर पर्पस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बीइंग अ ब्यूरोक्रेट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज नुआंसेस ऑफ दिस सब्जेक्ट. बट ये पेपर है, ठीक है, हमारा मेन टारगेट रहेगा टू क्लियर दैट एग्जाम, और उसके लिए ना हमें वो एरियाज पहचानना कि भाई कौन से एरियाज हर एक साल प्रीलिम्स के पेपर में डोमिनेट कर रहे हैं, एंड हम उन्हीं एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस करें. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सर एंड मैम. ठीक है. सो देयर आर वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी डीलिंग विद सिलेबस इन द फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन. This is your strategy building session, that how to approach the subject of polity. So पहली approach हम इसमें ये रखेंगे, या मतलब I will be dealing or approaching this subject in such a way that we are putting more focus on the paper or on the subjects or on the very basic topics जो यूपीएससी हर एक साल ज्यादा पूछता है. No matter what कि भाई उनमें से तो टॉपिक आएगा ही आएगा. For an example, majority of you would be reading the book that is called Lakshmikant. In M. Lakshmikant आपका पहला चैप्टर क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. No matter which year you name, from 2014 to 2023, there was not a single year when UPSC did not even ask the one question from that. Every year consistently UPSC is asking 1 or 2 questions for that matter from that first chapter, that is your historical background. So now if in the name of the importance, देखो सुनने में हमें क्या लगेगा कि सर फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस, दे आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट. दे आर वी कैन कंसिडर देम कि भाई ये कम इंपॉर्टेंट एरिया है. बट अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बनेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का. एंड दिस इज हाउ यू पीपल एनालाइज द ट्रेंड्स, है ना. फिर आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा कि भाई किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन टॉपिक्स पे कम फोकस करना है. सेकंड, एक ना क्लबिंग बनती है इन टॉपिक्स की. दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स, सेकंड इज योर डीपीएसपी, थर्ड इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज,
एंड फोर्थ टॉपिक है आपका प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बिगिनिंग में मिलता है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गो ऑन। ठीक है, तो दीज आर द सेकेंड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, हम थर्ड टॉपिक के ऊपर आते हैं कि भाई फिर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले कुछ सालों से द ट्रेंड ऑफ द यूपीएससी की भाई वो ना डायनामिक्स से थोड़ा डेविएट होके उसने अपना ध्यान जो दिया है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे दिया है। अगर आपको पता हो, आपकी जो क्लास 11 की एनसीईआरटीज, यहाँ पर एनसीईआरटीज पॉलिटी के लिए रेफर करते हो, तो मुख्य तौर पे दो एनसीईआरटीज हैं। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना, जिसमें आपका पॉलिटिकल जो पॉलिटी का एंगल है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंडामेंटल राइट्स, दिस दैट। एक आपकी पॉलिटिकल थ्योरी की किताब है जिसमें द कॉन्सेप्ट्स लाइक इक्वालिटी, द कॉन्सेप्ट्स लाइक सोशलिज्म, है ना, द कॉन्सेप्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द कॉन्सेप्ट्स लाइक लिमिटेड गवर्नमेंट, द कॉन्सेप्ट्स लाइक रूल ऑफ लॉ, ये भी पिछले कुछ सालों से रेपिटेटिव थीम्स बन गई हैं। सो इफ आई हैव टू गो इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर एंड टेलिंग यू कि भाई कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, और मैं भी इसी तरीके से अपनी क्लास में अप्रोच करूंगा, विल बी डूइंग दिस इन सच अ वे ओनली, आपको ऐसे ही करवाया जाएगा क्लासेस में, राइट। थर्ड टॉपिक में वी विल बी पुटिंग अ स्पेशल फोकस ऑन द थ्योरेटिकल थीम्स। People usually ignore this and then it results into their failure. Theoretical themes. Understood? उसके बाद अगर अगली बात पे बढ़े, हर एक साल एक क्वेश्चन either from the constitutional bodies, है ना, or from the non-constitutional bodies, ये पूछा जाता है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अभी मान लीजिए आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, कल को जाके यू विल बी गेटिंग पोस्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ व्हाट, एडीएम, है ना, उसके बाद डीएम बनोगे, देन कभी ना कभी तो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पे जाना है ना। तो जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, देन वी गॉट टू हैव यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है अंडर आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इटसेल्फ दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। Are you getting it? है ना, तो these are constitutional. Then non-constitutional में we'll be studying statutory bodies, for example CBI, for example CVC, for example we'll be studying the bodies like GST, this and that, है ना। तो ये सब चीजें we'll be studying all in clubbing in constitutional as non-constitutional bodies also. ठीक है, GST was added by an amendment, so it will become a constitutional body. तो ये सब चीजें हमारे लिए हमें क्या है, these become important, क्योंकि हर एक साल में से एक दो क्वेश्चन तो आते हैं। उसके बाद अगर आप अगली बात करो कि सर विच एरिया अनदर बिकम्स इंपॉर्टेंट, देखो एक टॉपिक होता है जिसको बोला जाता है हमारे इसमें आरपीए 1950 एंड 51, और यू कैन राइट इट 50 एंड 51, इट्स नॉट 50 to 51, इट्स 50 एंड 51, आरपीए 1950, आरपीए 1951, राइट। हर एक साल यू विल एनालाइज द ट्रेंड, भाई जो भी साल जनरल इलेक्शंस के ईयर का बनता है उस साल इस आरपीए में से, दैट इज आरपीए इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। दीज आर बेसिकली द टू एक्ट्स व्हिच आर गवर्निंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। एंड यू नो व्हाट कंट्री इंडिया इज? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, सर एंड मैम। डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स पावर टू रूल। सो इन डेमोक्रेसी द पावर टू रूल lies with whom? Lies with people. Now you all know that India has a huge population of 140 crores. Do you think it will be feasible for all the 140 crore Indians together in the parliament and then make the decisions? Answer to this question is no. Right? If there will be a lot of people, the decision making process will become complex. Hence, what is the procedure we have adopted to achieve the idea of democracy which India is? We thought that we will be doing what? We will be making constituencies. From constituencies, people will see that bhai hamara trust kisme hai. Who will be that representative whom we can trust that this person will be better able to represent our interest at the center level. ठीक है, तो हम उनके representatives को चुनते हैं जिनको नाम दिया गया MPs and MLAs को, उनके द्वारा decision making होती है। एंड अगर उनके द्वारा who command the trust of the people are the ones who are able to make decisions in India, है ना, अगर ऐसी चीज हो रही है तभी तो हम डेमोक्रेसी को अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन उनको सिलेक्ट करने के लिए विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, दैट इज इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो आप कैसे अपना ट्रस्ट दिखा पाओगे? हेंस इन एवरी इलेक्शन ईयर द प्रोसीजर ऑफ हैविंग इलेक्शंस, हाउ दे आर टू बी कंडक्टेड, इलेक्टोरल रोल कैसे बनाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है,
political parties कैसे बना सकते हो, this and that, everything will come under RPA 1950 and 51. So next year 2024 is what? Election, general election year. So 2023 में, 2024 में, 2025 में, the 3 consecutive years, इसमें आपके लिए RPA 1950 और 51 इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है. Then moving on to this aspect, इसमें अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना, और you have just have a normal glance of what polity is all about. So we have various topics. For an example, citizenship. है ना, तो सिटीजनशिप में व्हाट हैपेंस, पीपल यूजुअली से भाई आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक पढ़ना है सिटीजनशिप में एंड वी आर डन विद इट. नहीं, हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? सी, देयर आर वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप. आई एम नाउ गोइंग टू शो यू कि भाई कैसे, हाउ यू प्रेडिक्ट द पेपर. इट्स नॉट समथिंग एस्ट्रोलॉजिकल गेम और सो, इट्स जस्ट अबाउट ऑब्जर्विंग द ट्रेंड दैट विच वर द न्यूज विच वर देयर, और उन्हीं न्यूज के बेसिस के ऊपर हाउ यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन. वी आर जस्ट सीइंग इन 2 or 3 minutes इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ठीक है. बट सी, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सिटीजनशिप के कंटेक्स्ट में नॉट ओनली द स्टैटिक पार्ट बट एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, है ना, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस टू बी प्रिसाइज, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, देन सीएए, है ना, ऑफ 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ऑल दीज थिंग्स वर इन न्यूज. What do they belong to? Citizenship. फिर citizenship से क्वेश्चन आ जाएगा, you people will be like, market is like पता नहीं कहां से. नहीं, it is in news, we have to do it. और इसी अप्रोच से हम फोकस करेंगे, so that your newspaper tension is also relieved, ठीक है. So I'll be seeing the topics. I'll just show you in a minute or two how to approach these things. Then we have union and territories. Now again, how to approach this topic? You know that recently there was this in 2019. 2019 is a recent matter. If we see the history of India, it goes back to 3,000 to 4,000 years. This 2019 is a very recent area, है ना? So in 2019, what happened? In Jammu and Kashmir was made from a state to a union territory, accepted. Now, if some state is being converted into a union territory, now again the demands are there. This case was in Supreme Court also. That shall the abrogation of Article 370 of the Constitution, 370 आर्टिकल जो हटाया गया, क्या उसको फिर से लाना चाहिए? Now, if it is made, then what? Again, हमारे लिए तो सर यूनियन एंड टेरिटरीज का चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा. Understood? So this union and territories chapter will become important for us. Alright, चले. उसके बाद, and you don't have to worry, in this foundation course, I'll be catering to all these things. राइट, कि भाई कौन सी चीज कैसे इंपॉर्टेंट बनेगी इस साल के लिए, क्या चीज न्यूज़पेपर में घूम रही है. सो वील बी केटरिंग टू एवरीथिंग, राइट. उसके बाद अगर अगली चीज एस्पेक्ट को डिस्कस करें, देन वी हैव वेरियस मिसलेनियस चैप्टर्स लाइक फॉर एन एग्जांपल सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, then we got to have the basic structure of the constitution. So these are the themes which have a huge basket, right? So we have amendment also, we have all these things together there. But इसमें से what happens, you do not have to focus on individual chapter. Understood? तो इसमें individual chapter पे focus नहीं करना. What we need to do is इनको club करना है basket में, because किसी साल किससे question आ जाएगा, किसी साल किससे question आ जाएगा. So this is the way to approach it. And इसी तरह से हम class में approach करेंगे. We'll be understanding all these things, but later on the revision mode हमारा focus सिर्फ वही रहेगा, भाई question किससे आता है. Are you understanding? चलिए. उसके बाद if we move on the next thing, है ना? So let's see the previous year question. Now talking about the previous year question, see, so this is the question which was asked this year only. 2023 के preliminary examination का question है ये. ठीक है? So let's read the statements. With reference to the finance bill and the money bill in the Indian Parliament, consider the following statements. ठीक है? कि भाई finance bill and money bill. Remember the keyword here, finance bill and money bill. उनको लेके statements को consider करना है. Let's consider the first statement. When Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. First statement कि भाई जब लोक सभा से राज्य सभा के पास फाइनेंस या मनी बिल जाता है, it can amend or reject it, right? Second thing, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. Third thing, in the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for the finance bill. Now, if you see, sir,
This question is about clear interlinkage. Lakshmikant does not give or regular sources or the standard sources whichever you are availing. It is not written in a crisp and a clear manner there. How will we study this? How will we get to know कि यार अगर हमें फाइनेंस बिल पढ़ लिया या हमने मनी बिल पढ़ लिया, we need to make such an interlinkage, है ना? Because money bill etc. is given under Article 110 of the Constitution. It is defined there, right? And joint sitting is there under Article 108 of the Constitution. How we need to know that? We need to interlinkage both these articles. How will we got to know that finance bill which is mentioned under 110 of the Constitution and financial bill of which is mentioned under 117 clause 1 and 117 clause 3? How we have to differentiate this, sir? How we have to interlinkage? कैसे करेंगे? ऐसे तो बहुत interlinkages बन जाएंगी. So how we will approach now? See, clear first statement. Passage of laws as money bills. Supreme Court to list case on October 12 for procedural directions. Second, Lok Sabha passes finance bill without discussion. It is of March 24, 2023 and your examination was in May, 28th of May, right? Then Supreme Court to form 7-judge bench to consider issue related to money bill. Again, money bill was in news. Again, finance bill was in news. Passage of Finance Act as money bill. Central government opposes priority hearing before Supreme Court. Now, what does all these news clippings tell you? कि जी प्लीज बार बार चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बोल रहे हैं कि भाई प्लीज इस साल के लिए पढ़ ले. यूपीएससी विल आस्क यू. ये एक दिन की न्यूज नहीं है. These are the collective snippets which I have collected all over the year of 2022 and your examination was in 2023. So इस क्लास में मैं जो approach रखूंगा will be derived on the similar basis. We'll be holistically covering the syllabus, but our emphasis would be, the interlinkages would be based on these snippets. Am I clear to you? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, because exceptions are always there. You might feel that. See, question number 36 of set A 2023. There was this: consider the following statements. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of the duties of his or her office of President before the date of the decision becomes invalid. कि मान लीजिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जी को इलेक्ट करा गया और लेट्स से प्रेसिडेंट जी को इलेक्ट करा गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये मिलता है कि भाई जब वो जिस प्रोसीजर से उनको इलेक्ट करा गया था, that his elections are void in nature. Now if his elections are void, he needs to be removed, है ना? तो उनको हटा दिया जाएगा. लेकिन क्या उनको हटाने के बाद जब तक वो ऑफिस में थे उन्होंने जो भी किया, क्या वो सारे एक्ट्स भी अंडू कर दिए जाएंगे? This was the first statement. Second, election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. Now, जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस पढ़ेंगे, you will realize that कि भाई MPs भी वोट करते हैं, MLAs भी वोट करते हैं. लेकिन ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई अगर मान लीजिए किसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड है, लेट्स से वेस्ट बंगाल की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड है, तो वहां पे MLA तो होंगे ही नहीं. लेकिन उस कंटेक्स्ट में इफ यू वांट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या वो वेस्ट बंगाल के MLAs के बिना हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? तो ये एस्पेक्ट एक्सप्लोर कर रहा है. Then third में, when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his assent. कि आपको पता है जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जी पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा एंड इवन कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, है ना? जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उसको ये तो पता होगा भारत में कोई भी बिल एक्ट तब बनता है, भारत में इंप्लीमेंट तब होगा जब लोकसभा राज्यसभा पास कर दें और भारतीय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति उसके ऊपर साइन कर दें. तो अभी ये पूछ रहा है कि भाई किन मामलों में प्रेसिडेंट के लिए असेंट देना अनिवार्य है, इट इज कंपल्सरी फॉर हिम, और कहां पे वो डिनाई भी कर सकता है. सो दिस इज ऑल द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट. अभी ये पूछा क्यों जी? ऑब्वियस रीजन, द्रौपदी मुर्मू जी हैज बीन इलेक्टेड एज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? एंड बीइंग अ वुमेन, दैट आल्सो अ ट्राइबल वुमेन, that's a huge achievement for India, and entire year this was in news, right? So you can read, this is Indian Express ka explained page, right? How the President of India is elected. This is the election manner jahan se aapka ye statement nikal sakta tha, second wala yahan pe bataya inhone. Then we have Draupadi Murmu elected as the 15th President of India. In detail everything president's election was covered in newspapers, right? So this is how you derive, you predict कि भाई कैसा पेपर होगा, and then you emphasize, and this will be my approach in the class. Understood?
चलिए, then this means paper. So basically अभी तक what was the scenario was कि you people feel हाँ Delhi नहीं, now we'll be bringing that quality to your space where you are there, right? So there has to be certain sort of approach which has to be followed for this examination, है ना? And we promise you that we'll be inculcating that approach there, right? चलिए, then let's look at this question. This is 2023 का भी पेपर जो अभी सितंबर में हुए हैं पेपर, right? First question: constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. Then who are entitled to receive free legal aid? This judicial independence topic was in news for the entire year, right? क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एनजैक वाला केस आपने सुना होगा कि भाई गवर्नमेंट वाज इंटरफेयरिंग एंड उसके बाद जुडिशियल लेवल के ऊपर इतनी पेंडेंसी चल रही है ना? I would also suggest you to get involved or indulge into intellectual debates. When this recent CJI of India, Justice D.Y. Chandrachud, CJI D.Y. Chandrachud, he got there, so he went to this enclave in India today, है ना? Not India Today, I don't know the name of that, but the person hosting that show was Kamal. So he asked the CJI that with respect to everything, you people rejected NJAC, still the pendency in Supreme Court is rising. If I name you the exact number, the present pendency is 70,000. 69,870 something is the pendency in Supreme Court in the present day. Us context mein he said that how do you view this pendency? You are now the CJI, how will you deal with it? And see, this is a negative statement. He was being targeted, right? But understand the intellectuality with which he responded. You know what he said? He said, I look at this increasing pendency from a different point of view. Though I am acknowledging this problem, but see, this increasing number of pendency also shows the increasing trust of Indian people which they have in the Indian judiciary. कि भाई केस की पेंडेंसी इसीलिए बढ़ रही है ना कि लोगों का विश्वास जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो और इंटैक्ट हो रहा है, इसीलिए तो ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास. So this is how both the points have to be shown in the examination, means examination by you, positive also, negative also. Because aksar when we see the aspect of judicial pendency, we see it in one aspect. But it is a negative thing, but it is positive also, sir. It is the perfect example of increasing trust of the Indian people in the Indian judiciary, which was very beautifully highlighted by the Chief Justice of India, right? Then if you talk about this NALSA statement, है ना, तो I'll show you. See, भरे हुए था न्यूज़पेपर नालसा के आर्टिकल्स के साथ. यूपीएससी एसेंशियल्स में 1 word a day talks about नालसा. इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज था. अगेन नालसा to have legal aid defense counsel system in every district, said by Justice U.U. Lalit. Then presiding officers of a legislature remind all branches of state to respect constitutional boundaries. Everywhere it was filled with NALSA. So this is how when people or topper says that means is predictable. This is how it is, and this will be our approach in the class to do the foundation course, or my approach to deal with the foundation course here, right? चलिए, उसके बाद answer writing technique. We'll not be discussing it in detail because it will not be justice to you people that before teaching anything I am starting with answer writing. See, I just want to show you that what should be your approach in doing any topic, right? वो आंसर राइटिंग देखो, मेन मुद्दा क्या है? कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इन द एंड या तो प्रीलिम्स में आंसर टिक करना है करेक्ट, या आपको एक बेहतर आंसर लिखना है. ठीक है, आंसर लिखने के लिए क्या चाहिए? सब कुछ आंसर लिखने के लिए तो पढ़ रहे हो. फाइनली तो आपका जो आंसर कॉपी है दैट विल बी द मोड ऑफ कम्युनिकेशन कि भाई आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, वो कम्युनिकेट एग्जामिनर को कौन कर पाएगा? आपकी आंसर कॉपी. सब कुछ यहां तक आना है. लेकिन इफ वी ऑलरेडी नो द एंड पॉइंट, तो जो इसके लिए रॉ मटेरियल आप पिकअप करोगे ना, वो एक बेहतर नजरिए से कर पाओगे. नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी. सर वर्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है, सर इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, सर व्हाट टू राइट इन अ बॉडी, सर कनेक्टर क्या होता है, सर व्हाट इज कंक्लूजन, दिस एंड दैट. नहीं, ठीक है. अंडरस्टैंड, कोई भी टॉपिक को मीन्स के एंगल से एक्सप्लोर करना है, व्हाट टू डू. बेसिकली देखिए, when we talk about, I'm talking about polity specifically here, rest all the subjects will be dealt later, but polity में we have two sort of questions, one which belong to the arena of static, जैसे हमने नालसा का क्वेश्चन देखा. Other are ones which belong to the current aspect. ठीक है. So talking about the static topics, now you know what, static में there will be, देखो थीम सबका सेम होगा. Here also we need to got write an introduction,
Here also in the body part, we need to write the positives of the statement, we need to write the negatives of it, and in the end we need to write a conclusion slash a way forward. यही है जी, है ना. अभी नाउ लेट्स सी, कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन है ना. लेट्स से स्टैटिक क्वेश्चन आपको उन्होंने पूछ लिया जी फंडामेंटल ड्यूटीज में से. या लेट्स से करंट एस्पेक्ट, अभी मुद्दा जो चल रहा है, दैट इज योर राइट टू इंटरनेट. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज लेट्स से अगर एग्जामिनर पूछ रहा है, एंड लेट्स से यू आर एन एग्जामिनर, आपने किसी बच्चे को पूछा कि भाई मुझे फंडामेंटल ड्यूटीज बताओ, है ना, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उस बच्चे से? आप सबसे ज्यादा ये एक्सपेक्ट करो कि भाई इसको पता होना चाहिए कि भाई मेरे संविधान में, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन में, वेयर आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड. क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी जब 1949 में बनके 1950 में तैयार हो गया था, या बाद में लेके आए? अगर बाद में लेके आए, विच वॉज द नेम ऑफ द कमेटी जिसकी रिकमेंडेशन पे ये लेके आए, और जब लेके आए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये मेंशन है तो कौन सी अमेंडमेंट इनके साथ एसोसिएटेड है. तो ये तो हो गई ब्रॉड सीन की इंट्रोडक्शन जो एक एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा. सो ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन वुड बी दैट फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 51 कैपिटल ए, Part 4A of the Constitution. They were added via 42nd Amendment of the Constitution in 1976 on the recommendations of Sardar Swaran Singh Committee. Beautiful introduction बन गया. Positive, negative तो सेम ही रहेंगे, ठीक है. अगर आप राइट टू इंटरनेट की बात करो तो एग्जामिनर को पहले ही बता दो. So if you feel that some topic belongs to current arena, it is going in news, उसका इंट्रोडक्शन हमेशा उसको करिए with the context, so that the examiner should know कि भाई this person is a well aware person, he is well aware what is going on in the surroundings. Newspaper is not syllabus. Newspaper से UPSC का जो expectation है that the student should know what is happening in his or her surroundings, वो हम expectation पूरा कर रहे हैं. Let's say question is from right to internet, right? Here you should be clearly telling the examiner that sir and ma'am, recently Kerala High Court in Fahima Shireen case said that right to internet is a fundamental right under article 21 of the constitution. तो उसको उनका कंटेक्स्ट बता के इंट्रोड्यूस करना है. सो अभी करंट टॉपिक्स के लिए पहली चीज मेंस को तैयार करते टाइम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? भाई आई शुड बी एक्सट्रैक्टिंग व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज. इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. फिर इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव. लास्टली कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड में प्रॉब्लम आ गई. अभी दिस इज अ स्टैटिक टॉपिक, वो चीज हो चुकी है ना. इफ समथिंग इज बीइंग ऑलरेडी डन, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपने फेस करके खत्म हो गई. नाउ व्हाट यू विल सजेस्ट अ कंक्लूजन कि भाई ये ऐसे कंक्लूड करा मैंने उस प्रॉब्लम को, दिस वाज अ सॉल्यूशन. नाउ राइट टू इंटरनेट इज अ करंट टॉपिक, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, यू आर स्टिल इन द प्रॉब्लम. देन व्हाट यू विल लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स कि भाई इनको अप्रोच कैसे करना चाहिए, व्हाट विल बी माय वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट, राइट. सो करंट क्वेश्चंस में ऑलवेज प्रिपेयर अ वे फॉरवर्ड. यस सर, I acknowledge this problem, Mr. Examiner, and this is the way forward. Optimistically, I will be dealing this. And static topics में conclusion. This is how we are going to approach in the foundation course. Am I very clear on this? चलिए, last aspect, the strategy is your how to utilize the test series. And इसमें अगर हम बात करें, देखो, आप लोग कोई भी टेस्ट लगाओगे. अच्छा, टेस्ट का सबसे पहला I am telling you, मान लीजिए आपने क्लासेस शुरू करी, 2-3 दिन का ब्रेक पड़ गया, है ना. आपको वो एक प्रॉब्लम आती है हमेशा कि भाई सर वी आर नॉट एबल टू गो बैक, गेट बैक इनटू द प्रिपरेशन मोड. तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए, 2-3 टेस्ट लगा दिया करो. इमीडिएटली योर ब्रेन विल स्टार्ट रनिंग एंड यू विल कम इन द प्रिपरेशन मोड बैक, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू यूटिलाइज द टेस्ट सीरीज. तो टेस्ट सीरीज में ना, मान लीजिए आपने कोई भी टेस्ट लगाया, उस टेस्ट में 100 क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, राइट. अभी आई एम टेलिंग यू द क्यूरेटिव टेक्निक्स, राइट. हमने अभी अपनी प्रायोरिटी सेट करी थी कि सबसे पहले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यही करा था ना. सेकंड इज योर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, दिस एंड दैट. देन इट इज योर स्टैटिक पोर्शन, है ना. एंड देन लेट्स से XYZ सिटीजनशिप एक्सेट्रा.
चलो नाउ व्हाट हैपेंस इज आपने 100 क्वेश्चंस करे, हाइपोथेटिकल एक फिगर एग्जामिन कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। लेट्स से जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से 25 क्वेश्चंस आए, इसमें से फिर से 25 क्वेश्चंस आए, इसमें से भी 25 क्वेश्चंस आए, इसमें से भी 25 क्वेश्चंस आए। दिस इज टेस्ट सीरीज, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज आउट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के 25 क्वेश्चंस व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपने सही करे जी इसके 23। फंडामेंटल राइट्स में यू स्कोर्ड 21 मार्क्स, 21 वर करेक्ट है ना। स्टैटिक में यू स्कोर्ड लेट्स से बहुत कम आए, लेट्स से 9, एंड देन सिटीजनशिप में आल्सो यू जस्ट स्कोर्ड 3 है ना। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को 3-4 तरीके में क्लब कर लेना है। सबसे पहले वो जो आपको कंप्लीटली आते थे, छेड़ना ही नहीं है उनको, तो टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन ढूंढना ही नहीं है, राइट? सेकंड वो वाले जो आपने पढ़े थे बट क्वेश्चन पढ़ते हुए यू गॉट कंफ्यूज्ड, ठीक है, बट यू नो द आंसर, बाद में लगा हाँ आते हैं। थर्ड, वैसे जिनके 4 पॉइंट्स थे, 4 में से लगता भाई 2 आते थे 2 नहीं आते थे, राइट? 50-50। एंड लास्टली, जिनके बारे में यू हैव सच अ थिंग कि भाई ये तो हमें सर बिल्कुल ही नहीं आता था, वी डू नॉट नो अबाउट इट, ऐसे क्लब कर लो। क्लब करने के बाद व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? नाउ आपको पता है कि भाई जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। सो मान लीजिए आप अगली बार टेस्ट देने जा रहे हो, हाउ टू यूज दिस एनालाइजेशन। नाउ एनालाइजेशन तो मैंने सिखा दी, अब इसको यूज कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम इट शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी कि भाई मैं फर्स्ट टाइम अगर इन चारों का टेस्ट है तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिविजन क्या होगा, सिटीजनशिप। मेरा सेकंड रिविजन क्या होगा, स्टैटिक थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, दिस एंड दैट, है ना। तो मेरा क्यों, बिकॉज हमने बोला कि भाई इनसे तो क्वेश्चन आता है, लेकिन व्हाट इफ इनसे क्वेश्चन आ गया तो आपको ही ऑलरेडी आते हैं, यू आर डूइंग वंडर्स। तो बैलेंस करके चलो। नेक्स्ट टाइम अरेंज योर स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजाइज योरसेल्फ, है ना। अपना वो चेंज करो, अपने आप को पहचानो कि भाई ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट पर मुझे आता है ना। वी डू नॉट हैव सर्टेनिटी कि भाई यूपीएससी सिटीजनशिप से पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अगर सिटीजनशिप से भी क्वेश्चन आता है वो भी 2 नंबर का ही है सर, है ना। सो फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम द फर्स्ट टॉपिक आई विल बी रिवाइजिंग इज सिटीजनशिप, सेकंड आई विल बी डूइंग इज थ्योरेटिकल पार्ट, थर्ड आई विल बी डूइंग इज एफआरडी, पीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड आई विल बी डूइंग, फोर्थ आई विल बी डूइंग इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिकॉज ये आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एरिया है। You already have a strength in this area. यहाँ पे weakness है, उसको भी remove कर लो तो double strength हो जाएगी. Now this is how I'm going to channelize this foundation course to identify your strengths, to identify your weaknesses. But this will be doing once we are done with entire foundation. है ना, ये approach से करेंगे. Entire thing relating to the newspapers, extract करके कौन सी चीज important बन रही है इस साल, उस पे ज़्यादा focus. So this all would be the what we can call the main objective of our foundation course. ठीक है? So this was with respect to the strategy session. I hope you like it. If you got any doubts, you can contact me, and wish to see you in the orientation session. Thank you so much. See you guys.